ओके, क्लास 10 गेस्ट पेपर बायो का, जिनका कल एग्जाम है 2 o'clock। चैप्टर 10 गैशियस एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट। हाउ डज ट्रैकिया डिवाइड टू फॉर्म डिफरेंट एयर पैसेज वे टू रीच alveoli? Number two, how does gaseous exchange differ in leaves during day and night? Number three, list the structural feature of nasal cavity and write the function of each in them in breathing. Number four, what is the difference between expiration and inspiration? And number five, how are lungs adopted for gaseous exchange? और लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर 10 में से वो है ये, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन एयर पैसेज वे एंड द लंग्स। चैप्टर 11 पे जाते हैं, होम्योस्टेसिस पेज, जिसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट वन है नेम द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नंबर टू, लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। नंबर थ्री, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फोर है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। एंड नंबर फाइव है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिटोनियल डायलिसिस। एंड नंबर सिक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, आल्सो ड्रॉ डायग्राम। उसके बाद आपके पास 12 चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डाउन थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नंबर टू है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपके पास तीनों टर्म्स आपने डिफाइन करनी है। उसके बाद नंबर थ्री है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लोब्स ऑफ सेंट्रल कॉर्टेक्स। नंबर फोर है राइट डाउन द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। नंबर फाइव इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 12 चैप्टर से वो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। एंड नेक्स्ट इज व्हाट डू यू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल मिडल एंड ईयर ऑफ मैन। इसके बाद चैप्टर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन में है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोन। नंबर टू, राइट शॉर्ट नोट ऑन अपेंडिकुलर skeleton. Number three, briefly explain movable joints. Number four, differentiate between ligaments and tendons. Five, what do you know about the types of cartilage? Long question में है explain the working of antagonistic muscles. Number 14, reproduction. Short question, what is double fertilization? What do you know about the alternation of generations? Draw a flow chart for organogenesis. Number four है write a note on parthenogenesis. Number five है write down the name of methods of asexual reproduction. Number six है how does budding occur in yeast. Long question में describe the female reproductive system of rabbit. And next describe the male reproductive system of rabbit. Inheritance में short question है what is the difference between the following. Number one, number two and number three. Number two है आपके पास what do you know about chemical composition of chromosomes. Number three है why Mendel is selected pea plant for his experiment, give reason. Number four आपके पास है, number five है what is the difference between the following. ये दो में आपने difference लिखना है। सो ये चैप्टर 15 हो गया। अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। अच्छा, 15 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो है एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नंबर एंड सेकंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 16 है मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट। आपके पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नंबर टू है इन व्हाट वेज नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर। what number three what do you know about the amplification and nitrification. Number four what is the difference between mutualism and communalism. And five what are ectoparasites and endoparasites, also give examples. Long question में है write a detailed note on nitrogen cycle, very important question. 17, biotechnology. What is the difference between alcoholic and lactic acid fermentation. Number two है what are the objectives of genetic engineering. Number three, what are basic types of genetic engineering? Number four, how carbohydrate fermentation is already related in respiration. Fifth, what is the difference between biotechnology and fermentation? And long question में है explain achievements of genetic engineering. Last 18, pharmacology. Short questions has can briefly explain the mode of action of vaccine in body, how bacteria develop in resistance against antibiotics, name the major group of antibiotics and group of disease. और इसके शॉर्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है आपके पास ये
गिव द रिसोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, ये 3 ड्रग्स हैं जिनके हमने रिसोर्सेज करने हैं, पेंसिलिन भी शामिल है। फिफ्थ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास शामिल है, डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स। और अब आते हैं गैस पेपर पे। सेक्शन बी, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सप्लोरेशन। Number two, name the parts of nephron. Number three है along with excretion, kidney also playing role in osmoregulation. Give brief comment. Number four है define the following terms. This one, and this one. Number five है name and define three types of neurons. Six है differentiate between ligaments and tendons. And seven है write the names and the number of important bones of appendicular skeleton. Eight है write a short note on third word of flower. सेक्शन सी, ये भी 15 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग टर्म्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस एंड जीन एंड एलील। और सेकंड इज व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, ये हमने अभी भी किया है। थर्ड है डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। फोर्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिफ्थ है इनलिस्ट एनी थ्री अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिक्स्थ है आपके पास mode of action of vaccine in the body. Seventh, name the major groups of antibiotics and write disease against them used. Okay. और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 3 हैं, इनके दो पार्ट्स हैं, आप इनमें से देख सकते हैं। नंबर 1 इज डिटेल नोट ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आई, व्हाट डू यू नो अबाउट म्यूचुअलिज्म। फिफ्थ, explain and describe the Mendel's law of segregation. B है explain the working of antagonistic muscles. And sixth, explain various resources of medical drugs. And B part है explain basic steps of genetic engineering. So ये आपके पास एक गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर है।